So length of conjugate axis is 24. So by comparing Fushi is 0 plus minus BE, we get BE equal to 13 and also 2B equal to 24. Length of conjugate axis we know that 2B equal to 24, now B equal to 12. Substitute this value in this equation number 1. 12 into E equal to 13, now E equal to 13 by 12. Therefore by A square equal to B square, E square minus 144 and 169 by 144 minus 1. After calculation you will get 25 by 144 and this is cancelled. A square equal to 25. Therefore required equation of hyperbola be x square upon a square minus y square upon b square, that is 144 and equal to 1. This is complete solution of this question. Now the next question is question number 15, the last question of this exercise, which is given 0 plus minus root of 10 and passing through point of 2 and 3. Comparing by Fushi, 0 plus minus BE, we get BE equal to root of 10, and if let equation of hyperbola be x square by a square minus y square upon b square equal to 1. डिफरेंट कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। जैसे कि आपको फूशी और डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो तो पीएस इक्वल टू ईपीएम, फूशी एंड वर्टिसेस गिवन हो तो आप डिफरेंट कंडीशन, जैसा मैंने क्वेश्चन किया अभी, फूशी एंड लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस गिवन हो तो कैसे करते हैं। And in this question, Fushi is given and point from where hyperbola is possible. In this condition, we considered an equation of hyperbola just like this. Since hyperbola is passing from 2, 3, therefore 2 to the 4 by a square minus 3 3 is 9 by b square equal to 1. Therefore 4 upon a square equal to 1 plus 9 upon b square. Nine upon b square and a square equal to 4 upon 1 plus 9 upon b square. We know that a square equal to b square into e square minus 1 and a square equal to b square e square minus b square. Substitute this value 4 upon 1 plus 9 upon b square equal to b की value 10 minus b square and calculate it 4 upon 1 plus 9 upon b square equal to 10 minus b square and 4 upon 4b square upon b square plus 9
equal to and plus b square equal to 10. Therefore, taking common b square, 4 upon b square plus 9 and plus 1 equal to 10, and b square 4 plus b square plus 9 upon b square plus 9 equal to 10, and b square in bracket b square plus 13 upon b square plus 9 equal to 10. By cross multiplying, b to the power 4 plus 13b square equal to 10b square plus 90, and after transposing the term we will get b to the power 4 plus 3b square minus 90 equal to 0. Factorize this polynomial in the term of b and try to get the value of b square and substitute this value in this equation. A square equal to this, you will get the value of a square and value of a square and b square. When you substitute in this equation, easily you can find the equation of hyperbola. तो स्पेस कम है, यहाँ से आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो. इसे फैक्टराइज कर देना तो बी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, और बी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू स्टैंडर्ड इक्वेशन में डाल देंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा. तो सॉल्व करने का प्रयास करिएगा जहाँ तक भी हो पाएगा. और आज की क्लास में बस इतना ही. शेष फिर कल आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करा देंगे. वन क्वेश्चन मोर चला है ना दिन, ठीक. वन क्वेश्चन मोर. Question is that Fushi is given, Fushi plus minus 4 and 0, and the length of latus rectum equal to 12. We know that length of latus rectum is 2b square upon a equal to 2, and also we know that AE equal to 4. Therefore, this implies that 2b square equal to 12a, and b square equal to a square minus 1, a square minus a square. Substitute the value of b square, 12 6 ja, b square equal to 6a, and here is 16 minus a square. This implies that minus a square minus 6a and plus 16 equal to 0. Now a square plus 6a minus 16 equal to 0. And when you factorize 8a minus 2a, 16 equal to 0, a plus 8 and a minus 2 equal to 0. If a plus 8 equal to 0, then equal to minus 8 not possible, because length of transverse axis or length of conjugate axis both are positive. Scalar quantity है, ये negative नहीं हो सकती. Therefore, if a minus 2 equal to 0, now a equal to 2. Therefore, b square equal to 6 into 2, that is 12. Now the required equation is x square by 4 minus y square by 12 and is equal to 1. हर कंडीशन में आप हाइपरबोला के इक्वेशन को ऑब्टेन करने के जितने मेथड हो सकते हैं वो आपने पढ़ लिए. अब आप ट्राई करिए, जहाँ भी जो भी बुक है आपकी आर्य शब्दवाल, आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी मैंने करा दिया. जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप मैसेज करोगे तो मैं सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.